Hello everybody. In the last class we have solved the sum question of the exercise 6.1 which is based on the trigonometric ratios, and in this volume we will continue our exercise 6.1 from the remaining questions up to the question number 11 we have solved, and from 12th question we will start right now. So let's proceed. Our 12th question is prove that. अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन है अप टू 20 वी हैव प्रूव. सो आवर 12th क्वेश्चन इज cos 30 plus sin 60 upon 1 plus इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है √3 अपॉन 2. बात समझ में आई यहां तक? ये तो चलो अपना हो गया क्वेश्चन. हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल लानी है. कैसे? जो भी प्रोसीजर होगा अपन फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फर्स्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट एनी साइड. एनी साइड मीन्स आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ये वैल्यू लाना काफी टिपिकल हो जाएगा. तो ये इसको मर्ज करके अपन ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ आई एम सेलेक्टिंग LHS. जो भी LHS आप एज इट इज कॉपी करें. cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री. ये अपना हो गया क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है. LHS. Now apply all the values cos 30, sin 60, this one and this one in the question. According to the our trigonometric table, cos 630 is √3 upon 2. ये आपको लर्न होनी चाहिए. Sin 60 is again √3 upon 2 plus 1. Cos 60 is 1 upon 2 and sin 30 is again 1 upon 2. Clear? ये सेम वैल्यू है 2 टाइम्स है, तो अपन लिख सकते हैं 2 into √3 upon 2 upon 1 half and half 1 plus 1 is 2. Clear? This cancel by this. क्या बचा आपके पास? √3 upon 2, जो कि आपका किसके इक्वल है? RHS. और हमें यही प्रूव करना था. That's when. Now let's proceed. The next question number 13, which is 4 cot square 45 minus 6 square 60 minus sin square 30. और हमें ये प्रूफ किसके इक्वल करना है? -1/4. इसका रिजल्ट आना चाहिए -1/4. ये इसका रिजल्ट आना है. तो मैं यूं मान लो कि मैंने LHS यहां से स्टार्ट किया. LHS इसके आगे की ये तो क्वेश्चन हो गया अपना इसी टाइप में. ये इक्वल में -1/4 रहेगा और मैं LHS सेलेक्ट करते हुए चल रहा हूं, तो जो कि क्या होगा? 4 into cot 45. Cot 45 is 1 and square of this is the whole square minus 660 is 2 and square also. sin 30 is 2 and square also. बात समझ में आ गई यहां तक? sin 30 है ना? हाँ, sin 30 हो गया. रिजल्ट आया अपने पास 4 into 1 minus 4, ये कैंसिल हुआ, जो कि क्या दे रहा है? -4. तो फिर रिजल्ट -1/4 चाहिए हमें. cot 45 is 1, sec 60 is 2, sin 30 is 2 to 4 -4, ये कैंसिल. तो मीन्स ये आपके बुक में करेक्शन है, कर लेना. -4 होना चाहिए वहां पे. क्लियर? सो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया. इसमें थोड़े डाउट्स हैं आपकी इस बुक में, तो पॉसिबिलिटीज है कि कोई क्वेश्चन में लेफ्ट राइट हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग. यदि आप वाले में -1/4 है तो चेंज कर लीजिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 you can solve, 15 you can solve. I am solving the directly question number 16.
And our question number 16 is sin 60 plus sin 30. Upon sin 60 minus sin 30. And we have to prove this one with tan 60 plus tan 45 is equals to tan 60 minus tan 45. Check. First of all, select LHS. Our LHS is sin 60 plus sin 30 upon sin 60 minus sin 30. Now apply all the possible values. Sin 60 is root 3 upon 2 plus half root 3 upon 2 minus half. Are you agree with it? Okay. Then from here 2 is common. यहाँ पे क्या आएगा root 3 plus 1 and 2 is here common. क्या आएगा root 3 minus 1. First and fourth and second and third will multiply by each other. What will you get? Root 3 plus 1 into 2 first and fourth upon root 3 minus 1 into 2. 2 cancel by 2. Answer is root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. But this is not equals to this one. So what will we do? Now select the RHS also, which is tan 60, tan 45, tan 60 minus tan 45. Tan 60 is root 3 and tan 45 is 1. Tan 60 is again root 3 and this is 1. Now these both are equal. It means LHS is equals to RHS and hence proved the question. Okay student, so please pause the video and note it down and proceed on the next question. Question number 17, 18, 19, 20, 19 मैं explain करता हूं. 19th question. And the given question is, जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं आपको खुद को सोल्व करने हैं. यदि कहीं डिफिकल्टी फील होती है तो आप शेयर करेंगे. 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30. 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 कोस 60. और हमें इसको प्रूव करना है 7/4 के इक्वल. Again select the LHS. I have already selected. This is our LHS. Now apply the values. 1 minus sin 45 is 1 upon root 2. Sin 30 is 1 upon 2. 1 plus cos 45 is 1 upon root 2 and cos 60 is 1 upon 2. Clear? देखो एलसीएम लेते हैं. यहाँ पे एलसीएम इज 2 रूट 2. तो यहां पे तो आएगा 2 रूट 2 बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन इज 1. माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या बचा 2 एंड प्लस 2 से 2 गया, कितना बचा रूट 2. आर यू एग्री विद इट? वेरी गुड. अगेन 2 रूट 2 इज कॉमन हियर. सेम वैल्यू 2 रूट 2 प्लस 2 plus root 2. You can check. Now 2 root 2 plus root 2 is 3 root 2 minus 2 upon 2 root 2 into again 3 root 2 plus root 2 upon 2 root 2. What it?
and in this case we can say that a minus b, a plus b, a square minus b square. A is 3 root 2 minus b is 2, a square minus b square, and these both are same. 2 into 2 is 4 and root 2 into root 2 is 2. Clear? Okay. 9 root 2 square is 2 minus 4 upon 8. यहां तक बात समझ में आई? Implies that 9 2 is 18 minus 4 upon 8, and 18 minus 8 is 14 upon 8, and it cancel by 2. Answer is 7 by 4, which is equals to RHS. So it is the solution of the question number 19, and let's proceed on the question number 20. Before that, pause the video and note it down. Our 20th question is cos square 0 minus minus 2 cot square 30 degree plus 3 cosec square 90 is equals to 2 sec square 45 minus tan square 60 degree. This is the our answer question. First of all, select LHS. Write as it is from here to here. LHS, which is cos square 0 degree minus 2 cot square 30 degree plus 3 cosec square 90 degree. Clear? And in the next, cos 0. Cos 0 क्या होगा? 1. Then 1 square. 2 cot 30 is root 3 and square. Cosec 90 is 1 and square. ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. 1 minus 2 into 3 plus 3. 1 minus 6 plus 3. 3 1 4 minus 6 is equals to minus 2. This is our LHS. Now simplify the RHS also, because this is not equals to at this time this one, but we can solve this one also to get this one value. RHS is equals to 2 sec square 45 degree minus tan square 60 degree. Apply the value of sec 45. Sec 45 क्या होगा? Sec 45 is root 2 whole square minus tan 60 is under root 3 whole square. Then 2 into 2 minus 3 is equals to 2 into minus 1, which is equals to minus 2. Now LHS is this, RHS is this, both are equal, hence LHS is equals to RHS. This is the answer of question number 20. Okay student, so please pause this and note it down. Now the next question, question number 21. Our question is, if x is equals to 30 degree, x is equals to 30 degree, then prove that. What we have to prove? There are total 4 parts in question number 21st, and first is
sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. चलो भैया स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अगेन LHS which is sin 3x and x is 30 degree, then sin 3 into 30 degree. 3 into 30 is sin 90 degree and sin 90 is 1. Are you agree with this? And now select RHS. RHS is 3 sin x minus 4 sin cube of x. 3 into sin x is 30 minus 4 sin cube x is again 30. यहां तक बात समझ में आई. Our next step is 3 into sin 30 is 1 upon 2 minus 4 sin 30 is 1 upon 2 and whole cube. Got it? 3 into root 2 minus 4 into 1 upon 8. Cube of half is 1 upon 8. 4 2 जा. Result क्या है? 3 upon 2 minus half. LCM is 2. Half देखो यहां से. Then 3 minus 1 is 2 upon 2 is equals to 1. Now LHS is equals to RHS. Okay student. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसी का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज tan 2x is equals to 2 tan x minus 1 minus tan square x. The same thing here. First of all select LHS which is tan of 2x. It means tan 2 into 30 degree, it is 60, so tan 60 degree, and tan 60 is under root 3. So this is the value of LHS. Now select RHS. RHS is 2 tan of x upon 1 minus tan square x. 2 into tan 30 because x is 30. 1 minus tan square 30. 2 tan 30 is tan 30 क्या होगा देखो यहां से. tan 30 is 1 upon root 3 upon 1 minus 1 upon root 3 whole square. बात समझ में आई यहां तक. It is 2 upon root 3 full upon 1 minus 1 upon. आगे करें इसको. देखो 1 का स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर ऑफ रूट 3 is 3. 2 upon root 3 upon 3 is LCM 3 minus 1. 2 upon root 3 upon 2 upon 3. 2 upon root 3. 3 minus 1 is 2 and 3 is 3. And the remaining part I am solving here. क्या क्या बचेगा देखो. ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हुआ. 2 into 3 upon 2 into root 3. ये से कैंसिल. 3 को अपन लिख सकते हैं 3 root 3 into root 3 upon root 3. ये से कैंसिल. रिजल्ट क्या है root 3 जो कि इक्वल है आपके LHS के. So LHS is this and RHS is this. Both are equal. That's why we can say that it is this one is equals to this one if x is equals to 30 degree. Are you agree? Okay student, let's proceed on the next part of the question number 21st. Before that, pause this and note it down. Next is 21st question and third part. Sin x is equals to under root 1 minus cos 2x upon 2. Clear? Yes. It is our question. And the same value is here. X is 30 degree.
अप्लाई हियर सेलेक्ट LHS जो कि अपने पास sin x एंड sin 30 जो कि इक्वल होगा 1/2 की। बात समझ में आई। नाउ सेलेक्ट RHS जो कि अपने पास है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस cos 2 into 30 because x is 30 cos 230 upon 2 result is 1 minus cos 60 upon 2 1 minus cos 60 is 1 upon 2 1 upon 2 upon 2 1 minus हाफ कितना बचेगा हाफ अपॉन 2। देखो ये अपने आप में एक रेशनल नंबर है यहां से, तो इसका डेनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेते हैं अपन। क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम मीडियल एंड मीडियल एंड अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड अंडर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये आपका हो गया, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। LHS किसके इक्वल हो गया RHS के। सो वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन नंबर पार्ट 3rd ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21st। नाउ द लास्ट पार्ट 4th। cos 3x is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x। yes, x is same here, so select LHS जो कि होगा cos 3x and cos 3 into x is 30 degree, so cos 90 and cos 90 is equals to 0। cos 90 किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। एंड सेलेक्ट RHS इज इक्वल्स टू जो कि आपके पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। गॉट इट। 4 cos 30 इज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 होल क्यूब माइनस 3 cos 30 is again root 3 upon 2। बात समझ में आई होगी यहां तक। 4 root 3 cube is 3 root 3 and 2 cube is 8 minus 3 root 3 upon 2। ये से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स क्या बचा 3 root 3 upon 2 minus 3 root 3 upon 2। both the values are same and subtracting from each other, it means the result is 0। So our LHS is equals to our RHS, hence proved। So student pause this and note it down and proceed on the next question, question number 22nd। According to this question, it is given that if A is 60 degree, what is the given? A is equals to 60 degree and B is equals to 30 degree. Then prove that cot A minus B is equals to cot A cot B plus 1 upon cot A minus cot B. Sorry, cot B minus cot A. It is our question. Minus symbol is here. Similarly, select the LHS. LHS, which is cot A minus B. Apply the value of A and B. Cot A is 60, B is 30. Cot 30 and cot 30 is under root 3. This is the value of LHS and our RHS. RHS is cot A, cot B plus 1 upon cot B minus cot A. Cot A is 60, cot 30 degree into cot 30 plus 1 upon cot A 60, cot B 30,
then cot B is 30 degree minus cot A is 60 degree. जहां पे A था मैंने वहां पे 60 रखा है और जहां पे B था वहां पे मैंने 30 रखा है अकॉर्डिंग टू द आवर क्वेश्चन. नाउ सिंप्लीफाई. cot 60 is 1 upon root 3 into cot 30 is root 3 plus 1. बात समझ में आई यहां तक. cot 30 is root 3 minus cot 60 is 1 upon root 3. ये इससे कैंसिल हुआ. क्या बचा? 1 plus 1 is 2 upon and denominator is 1. एलसीएम इसका कितना? रूट 3. क्या आया? रूट 3 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 माइनस 1. देखो ये एक रेशनल नंबर है अपने आप में, तो इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लो. फर्स्ट एंड फोर्थ 2 इंटू रूट 3 2 into root 3 and 1 will multiply by this, so result is इसका कितना आएगा? 2 into 1 is 2. 2 cancel by 2 and finally our answer is root 3. So this is the LHS and this is his RHS and finally both are equal, so our question is proved with LHS is equals to RHS which is equals to under root 3. So finally we have completed our exercise 6.1 which was based on the trigonometric ratios, and now only the miscellaneous exercise of the chapter 6 is remaining, and each and every question of this exercise is also very easy. You can solve yourself and I'm sure that you will not face any kind of mistakes in this exercise. Easily you will get your answer, so please try to understand each and every question and then solve in your rough notebook and make a separate notes for each and every question of this exercise. So miscellaneous exercise of the chapter number 6 I am leaving for you. I hope that you will solve yourself. So thanks for watching this video. Thanks again.